5 fundamental principles of Prout. प्रौत के 5 मूलीभूत सिद्धांत। समाजादेशेन बिना धन संचयः अकर्तव्यः। सामूहिक अनुमति के बिना भौतिक संपत्ति का संचय किसी भी व्यक्ति को न हो। इसका भावार्थ है, यह विश्व ब्रह्मांड सबों की यौथ संपत्ति है। इसे भोग करने का अधिकार सभी को है, किंतु अपव्यय करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त संपदा आहरण एवं संचय करता है, उस दशा में यह प्रत्यक्ष रूप से समाज के अन्य व्यक्तियों की सुख सुविधा को ही खर्च करता है। उसका आचरण प्रत्यक्ष रूप से ही समाज विरोधी है। इसलिए समाज की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को संपद संचय करने का मौका देना उचित नहीं है। No individual should be allowed to accumulate any physical wealth without the clear permission or approval of the collective body. The universe is the collective property of all. All people have usufructuary rights, but no one has the right to misuse this collective property. If a person acquires and accumulates excessive wealth, he or she directly curtails the happiness and convenience of others in society. Such a behavior is flagrantly anti-social. Therefore, no one should be allowed to accumulate wealth without the permission of society. Second सिद्धांत, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोगः प्रकर्तव्यः विचार समर्थितं बंटनश्च। विश्व के समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण संपदाओं का अधिकतम उपयोग एवं विवेकपूर्ण वितरण हो। इसका भावार्थ है, स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत में जो कुछ भी संपद निहित है, जीवों के कल्याण के लिए उनका उत्कर्ष साधन करना है। क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, ये जो पंच तत्वों के अंदर जहां भी जो कुछ छुपी हुई संपदाएं हैं, उनका उत्कर्ष 16 आना उनके सद्व्यवहार की प्रचेष्टा द्वारा ही संभव है। जल, स्थल, अंतरिक्ष का विस्तृत अन्वेषण कर मनुष्य की आवश्यकता के उपादानों के सार तत्वों को ढूंढकर निकाल लेना होगा। मनुष्य द्वारा आहृत संपदाओं को विचार पूर्वक मनुष्य मात्र में बांट देना होगा, अर्थात सबों की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही होगी। फिर भी गुणी और विशेष दशा में विशिष्ट व्यक्ति के प्रयोजन को भी ध्यान में रखना होगा। There should be maximum utilization and rational distribution of all mundane, supramundane, and spiritual potentialities of the universe. The wealth and resources available in the crude, subtle, and causal world should be developed for the welfare of all. All resources hidden in the quinquemental world, solid, liquid, luminous, aerial, and ethereal, should be fully utilized, and the endeavor to do this will ensure the maximum development of the universe. People will have to earnestly explore land, sea, space to discover, extract,
and process the raw materials needed for their requirements. There should be rational distribution of the accumulated wealth of humanity. In other words, all people must be guaranteed the minimum requirements. In addition, the requirements of meritorious people, and in certain cases, those with special needs, will also have to be kept in mind. Now, the third basic principle is 5.14. व्यष्टि समष्टि शरीर मानसाध्यात्मिक संभावनायां चरमोपयोगश्च। मानव समाज में व्यष्टि व समष्टि के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग हो। इसका भावार्थ है समष्टि देह का, समष्टि मानस का तथा समष्टिगत आत्मा का विकास करना होगा। समष्टि का कल्याण व्यष्टि में और व्यष्टि का कल्याण समष्टि में है। इस बात को भूलने से काम नहीं चलेगा। उपयुक्त खाद्य, प्रकाश, हवा, वासगृह एवं चिकित्सा द्वारा व्यष्टि देह के खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकने में समष्टि देह का कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए समष्टि देह की कल्याण कामना के लिए प्रेरित होकर ही व्यष्टि कल्याण करना होगा। प्रत्येक व्यष्टि में उपयुक्त समाज बोध, सेवा बोध तथा ज्ञान जगाने की चेष्टा नहीं करने से समष्टि का भी मानसिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए व्यष्टि मानव के कल्याण भावना से उद्बुद्ध होकर व्यष्टि मानस का कल्याण करना होगा। व्यष्टि में आध्यात्मिकता तथा आध्यात्मिकता केंद्रित नैतिकता नहीं रहने से समष्टि का मेरुदंड टूट जाएगा। इसलिए समष्टि के कल्याण के लिए ही व्यष्टि व्यष्टि में आध्यात्मिकता की ज्योति जगानी होगी। गिनती में केवल 4-5 शक्तिशाली व्यष्टियों से, 4-5 पंडित या बुद्धिमानों से अथवा 4-5 आध्यात्मिक साधकों के रहने से समग्र समाज की प्रगति सूचित नहीं होती। प्रत्येक व्यष्टि के शरीर, मन और आत्मा में अनंत विकास की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को कार्य में लगाना ही होगा। There should be maximum utilization of the physical, metaphysical, and spiritual potentialities of unit and collective bodies of human society. Society must ensure the maximum development of the collective body, collective mind, and collective spirit. One must not forget that collective welfare lies in individuals and individual welfare lies in collectivity. Without ensuring individual comforts through the proper provision of food, light, air, accommodation, and medical treatment, the welfare of the collective body can never be achieved. One will have to promote individual welfare motivated by the spirit of promoting collective welfare. The development of the collective mind is impossible without developing proper social awareness. Encouraging the spirit of social service and awakening knowledge in every individual. So, inspired with the thought of the welfare of the collective mind, one has to promote the well-being of the individual mind. The absence of a spiritual morality and spirituality in individuals will break the backbone of the collectivity. So, for the sake of collective welfare, one will have to awaken a spirituality in individuals. The mere presence of a handful of strong and brave people, a small number of scholars or few spiritualists, does not indicate the progress of the entire society. The potential for infinite physical, mental, and spiritual development is inherent in every human being. This potentiality has to be harnessed and brought to fruition. The 5.14 स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोगाः सुसंतुलिताः विधेयाः।
जगत के स्थूल सूक्ष्म कारण संभावनाओं के उपयोग में संतुलन हो। इसका भावार्थ है व्यष्टि और समष्टि देह की कल्याण साधना के लिए इस तरह काम करना होगा जिससे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक और स्थूल सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों में एक सुसामंजस्य रहे। प्रत्येक मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व समाज का है, किंतु समाज यदि इस दायित्व की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रत्येक घर में अन्न भेजने की व्यवस्था कर देता है, प्रत्येक के लिए गृह निर्माण कर देता है, वैसी हालत में व्यष्टि की कर्म चेष्टा ढीली पड़ जाएगी, वह क्रमशः सुस्त पड़ जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय जिस परिमाण में अर्थ की आवश्यकता होगी उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम विनय के द्वारा मनुष्य उपार्जन कर सके, वैसी ही व्यवस्था समाज को करनी होगी। और जहां मनुष्य के सर्वनिम्न प्रयोजन का मनोनयन करना है, वहां उस मनुष्य की क्रय क्षमता भी बढ़ा देना ही उनके लिए प्रकृष्ट उपाय है। सामंजस्य विधान कहने से यह भी समझा जाता है कि जो मनुष्य शरीर, मन और आत्मा तीनों से उन्नत हैं, उनसे सेवा लेने के लिए केवल समाज एक सामंजस्यपूर्ण नीति मानकर चलेगा। जिनकी शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक कोई एक ही शक्ति प्रकट है, समाज उनसे उसी प्रकार की सेवा लेगा। जिनकी शारीरिक और बौद्धिक दोनों शक्तियां ही यथेष्ट हैं, समाज उनसे अधिक परिमाण में बौद्धिक और अल्प परिमाण में शारीरिक सेवा लेने की एक सामंजस्यपूर्ण नीति मानकर चलेगा, क्योंकि बौद्धिक शक्ति अपेक्षाकृत सूक्ष्म और दुष्प्राप्य होती है। जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही शक्तियां मौजूद हैं, समाज उनसे अधिक परिमाण में आध्यात्मिक, अल्प परिमाण में बौद्धिक और अत्यल्प परिमाण में शारीरिक सेवा लेगा। समाज कल्याण में सबसे अधिक सेवा वे ही कर सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति है। उसके बाद जिन्हें बौद्धिक शक्ति है, वे अधिक सेवा कर सकते हैं। जिन्हें शारीरिक शक्ति है, वे यद्यपि तुच्छ नहीं हैं, तथापि वे स्वयं कुछ कर नहीं सकते। वे जो कुछ करते हैं उसे आध्यात्मिक, बौद्धिक शक्ति संपन्न व्यष्टियों के निर्देशानुसार ही करते हैं। इसलिए समाज नियंत्रण का भार शारीरिक शक्तियों के हाथ में भी रहना उचित नहीं है, बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में भी रखना उचित नहीं है, विषय बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में भी रखना उचित नहीं है। रखना उचित है उनके हाथों में जो एक ही आधार में आध्यात्मिक साधक, बुद्धिमान एवं साहसी हैं। There should be proper adjustment among these physical, metaphysical, mundane, supramundane, and spiritual utilizations. While promoting individual and collective welfare, there should be proper adjustment among the physical, metaphysical, and spiritual spheres and the crude, subtle, and causal words. For instance, society has the responsibility to meet the minimum requirements of every individual. But if it arranges food and builds a house for everyone under the impetus of this responsibility, individual initiative is retarded. People will gradually become lethargic. Therefore, society has to make arrangements so that people, in exchange for their labor according to their capacity, can earn the money they require to purchase the minimum requirements. In order to raise the level of the minimum requirements, people, the best policy is to increase their purchasing capacity. Proper adjustment also means that while taking service from a person who is physically, mentally, and spiritually developed, society should follow a balanced policy. Society will take physical, intellectual, or spiritual services from a person depending upon which of these capacities is conspicuously developed in that person. From those who are sufficiently physically and intellectually developed, society will follow a balanced policy.
and accordingly take more intellectual service and less physical service, because intellectual power is comparatively subtle and rare. From those who are physically, mentally, and spiritually developed, society will take maximum spiritual services, less intellectual services, and still less physical services. As far as social welfare is concerned, those endowed with spiritual power can render the greatest service, following those endowed with intellectual power. Those having physical power, though not negligible, cannot do anything by themselves. Whatever they do under the instructions of those endowed with intellectual and spiritual power. Hence, the responsibility of controlling the society should not be in the hands of those who are endowed only with physical power, or in the hands of those endowed only with courage, or in the hands of those who are developed only intellectually, or in the hands of those with worldly knowledge alone. Social control will have to be in the hands of those who are spiritually elevated, intelligent, and brave all at the same time. Now, the last Mulbhut Siddhant, fifth one, is 5.16. Desha Kala Patraiha Upayogah Parivartante Te Upayogah Pragatishila Bhaveyuh. देश काल पात्रों अनुरूप उपयोग के तरीके में परिवर्तन एवं उसका स्वभाव प्रगतिशील होना। इसका भावार्थ है किसी वस्तु का क्या यथार्थ व्यवहार है, वह देश काल पात्रानुसार परिवर्तित होता रहता है। जो यह सहज नीति नहीं समझ सकते हैं, वे लकीर के फकीर की तरह पुरातन कंकाल को ही जकड़ कर रखना चाहते हैं, इसलिए वे समाज में खारिज हो जाते हैं। क्षुद्र नेशन बोध, अंचल बोध, कुल गरिमा इत्यादि वृत्तियां मनुष्य को इस मूल तत्व से दूर हटाकर रखना चाहती हैं, इसलिए वे सहज तत्व को निश्चल भाव से स्वीकार नहीं कर सकते। फलस्वरूप अपने देश तथा जनता की अवर्णनीय क्षति कर यवनिका के अंतराल में डूब जाने के लिए बाध्य होते हैं। देश काल पात्रानुसार सारी वस्तुओं के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इसको मानना ही होगा, और इसको जानकर प्रत्येक विषय तथा भाव यानी आइडिया के व्यवहार में प्रगतिशील होना होगा। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो शक्ति लेकर आज बहुत बड़ी हथौड़ी चला रहा है, उदाहरणार्थ वैज्ञानिक गवेषणा साइंटिफिक इन्वेंशन द्वारा उसको एक शक्ति को केवल एक हथौड़ी चलाने के काम में न लगाकर एक से एकाधिक हथौड़ी चलाने के काम में लगाना होगा। अर्थात वैज्ञानिक गवेषणा में प्रगतिशीलता का भाव लेकर मनुष्य की शक्ति से क्रमशः अधिक से अधिक सेवा ले लेनी होगी। उन्नत प्रकार के यंत्र आदि तथा प्रगतिशील भावधारा में सृष्ट विभिन्न उपादानों और उपकरणों के व्यवहार के फलस्वरूप समाज में छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार की जो असुविधाएं दिखाई दे सकती हैं या दिखाई देंगी, उन सारी असुविधाओं को सामना साहस के साथ करना होगा और संग्राम द्वारा अपने को उपयुक्त कर जीवन की सार्वभौम चरितार्थता के पथ पर अग्रसर होना होगा। प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन हितार्थं सर्वजन सुखार्थं प्रचारितम्। The method of utilization should be of vary in accordance with the change in time, space, and person. And the utilization should be of progressive nature. The proper use of any object changes according to change in time, space, and person. Those who cannot understand this simple principle want to cling to the skeleton of the past, and as a result, they are rejected by living society. Sentiments based on narrow nationalism, regionalism, ancestral pride, etc., tend to keep people away from fundamental principle, so they cannot unreservedly accept it as a simple truth.
Consequently, after doing indescribable damage to their country, their fellow citizens, and themselves, they are compelled to slink away to the backstage. The method of utilization of every object changes according to time, space, and person. This has got to be accepted, and after recognizing this fact, people will have to progressively utilize every object and every idea. For instance, the energy which a powerful person utilizes to operate a huge hammer should be utilized through scientific research to operate more than one hammers at a time, instead of wasting the energy to operate just one hammer. In other words, scientific research, guided by the progressive ideas, should extract more and more service from the same hammer potential. It is not sign of progress to use outdated technology in an age of developed science. Society will have to bravely confront different type of obstacles, large or small, that are likely to arise due to the use of various resources and material created by progressive ideas and developed technology. Through struggle, society will have to move forward towards victory along the path of all round fulfillment in life. At the end, Master says, progressive प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम प्रचारितम. This is the progressive utilization theory propounded for the happiness and all-round welfare of all. Thank you.